आटा हो गया, आटा हो गया। इसमें कितनी घाटी everything. Somebody speaks an online. Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma Vishawahai. Om Shanti Shanti Shanti. Guru Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Chinmayam Vyapiyat Sarvam Trailokyam Sacharacharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shri Ramadutaya Namaha. 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 Om Shri Chinmaya Sadgurave 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 Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. I now hand it to Narayanji. Now seek blessings from Lord Shiva, Shankar Bhagwan and Parvati. Uma Maheshwara Bhyam Namaha. Blessings of Saraswati and Brahmaji. Vani Bhyam Namaha. Blessings from your elders. Mata Pitri Charana Kamale Bhyo Namaha. Blessings from Chirmay Bhagwan. Sadguru Charana Kamale Bhyo Namaha. Ishtadevata, blessings of your Ishtadevata, Kuladevata, blessings of your Kuladevata, Gramadevata, Om Hanamataye Namaha, Om Hanamataye Namaha, Om Hanamataye Namaha, Om Hanamataye Namaha, Tulasya Samarpayami, Namaskaromi, Dhupamajhrapayami, Saptasyasan Paridayasri, Saptasamidha Kritaha Deva Jadyayan Tanvanan Avadran Purusham Pashumma Dhupam Agrapayami
हं हनुमते नमः हं हनुमते नमः हं हनुमते नमः धूपमाग्रापयामि ततः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि सरसिजले सरोजहस्ते भगवतां सुवर्णमानशोभे भगवते नमः भूतले प्रसीदमह्यं हस्तु प्रक्षाल्य नैवेद्यादिकं पुरतो निधाय या फलनिरफला पुष्पाः याश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तान्नो मुञ्चन्तु पुंहसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे Celebration of 75 years of Chinmaya Mission and our beloved Chinmaya Veer Hanumanji. We are so glad all of you all are here today. If you have reserved a Havan Kund, please begin by making your way to the Kund and settle in comfortably. Our volunteers are there to help you out. And do not forget to wash your hands before you tie the red tie, the red thread. Our program is going to be beginning very, very shortly. Could I request everyone at the back, please settle down as soon as possible. Can I get a very loud Hari Om from every one of you from the crowd, please? Hari Om! Hari Om! Hari Om! That's fantastic. I love the energy. We're going to go in with a full zeal into the program. We begin today by acknowledging the traditional custodians of the land on which we gather, the Daruk people, and pay our respects to their elders, past and present. We recognize their deep and continuing connection to this land, waters and community.
It is an absolute privilege to come together on this sacred country. A very warm and heartfelt welcome to each and every one of you present here at the Chinmaya Amrit Mahotsav. A grand celebration of devotion, culture, and our beloved Chinmaya Veer. I am Kavita Amarnath, Shishu Vihar and Baby Shishu coordinator at the Chinmaya Mission Sydney, where I have the beautiful privilege of teaching our little ones from 0 to 5 years old, literally. And I'm Avni Gupta, part of our Chinmaya Yuva Kendra, the youth wing of Chinmaya Mission, and a junior Chinmaya Yuva Kendra Sevak, where I have the privilege of facilitating classes for our teenage students. Together, we are so deeply honoured to be your hosts for this magnificent celebration today. We also take a moment to acknowledge and thank the wonderful organizations whose support and partnership have helped bring this Chinmaya Amrit Mahotsav to life. The Hindu Council Association, Haryanvi School, SRM, Brahmin Samaj, VHP, BAPS, Kutum Australia, Sanskrit School, Garvi Gujarat, SCG, Sri Mandir, Guru Pramod Medaji from Shirdi Sai, HSS, and Sri Ramchandra Mission. We are truly grateful for your presence and your seva. Before we begin, a few housekeeping notes, please. Please ensure all your mobile phones are on silent. Can I request you check that your neighbor's phone are also on silent, please? Toilets are available at the back on my left and my right. And our volunteers will guide you if you require anything in particular. We have an emergency ambulance on standby should any... Began in 1951 under the guidance of Swami Chinmayananda to spread the divine knowledge of Advaita Vedanta, the universal science of life. At Chinmaya Mission, the motto is to give maximum happiness to the maximum number for the maximum time. Swami Chinmayananda's tireless efforts to share the wisdom of Vedanta and his foresight on the needs of humankind have touched countless lives worldwide. Like the rays of the sun, Chinmaya Mission illumines all areas it reaches. It is a global movement of positive values for all, of life well lived in harmony with humankind and nature. Today, Chinmaya Mission, headed by Swami Swarupananda, has 300 centers in 30 countries. As well as 100 educational institutes, hospitals, diagnostic centers, and outreach programs across India. Our mission is a global movement, a global family, united in our quest for spiritual growth and selfless service for the betterment of society. Through spiritual and academic education, youth empowerment, and seva activities, we strive to be selfless contributors to an inspired world. Our programs are designed to inspire individuals to live a life of purpose and joy. Chinmaya Mission is a living celebration of Bharatiya culture, of timeless Indian knowledge systems. Join us in our mission to empower minds and enrich lives.
At Chinmaya Mission, everyone is a positive change maker. This is your invitation to next level inspiration. Just click. Looking at the beautiful Vanaras who've all made a wonderful effort in dressing up, the little munchkins, to every one of them. This is a moment absolutely none of us will forget. Hari Om, Jai Hanuman in a very big and loud voice. Can I hear it all from you, please? Jai Hanuman! Jai Hanuman, 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 Hanuman, Jai 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 Hanuman. Shri Ram, Jai Ram, Jaya Jaya Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jaya Jaya Ram. Jaya Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. And accompanying our beloved Chinmaya Veer Hanuman, we are immensely blessed to welcome the global head of Chinmaya Mission Worldwide, Pujya Swami Swarupananda Ji. Also with us today are our beloved resident Swamiji, Swami Shrikrananda Ji, Brahmacharini Vasudha Ji from Melbourne, and Brahmachari Darshan Ji. What a truly blessed assembly on this most auspicious day. In just a moment, as Pujya Swami Swarupananda Ji graces the stage, we will have the honor of performing the Purna Kumbha, one of the most ancient and auspicious forms of welcome in our tradition. The Purna Kumbha, or full pot, symbolizes prosperity, completeness, and the divine presence. It is our sacred way of receiving our revered guest with fullness of our devotion. Please everyone, rise to your feet, fold your hands, and with full hearts, welcome Pujya Swami Swarupananda Ji. Hari Om! Before the puja. Before we begin the Purna Kumbha, we are deeply honored to acknowledge our Utsav Yajmans, the families whose generous devotion and seva have made today's sacred Havan possible. Please welcome with love and gratitude Akhilesh Chokraji, Sheila Chokraji and family, and Nirmala Narayanji and family, her daughters Shruti Swami and Deepthi Kumar. We are so grateful for your seva and your commitment to this divine celebration. Jai Hanuman.
योगाद्यतय शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके सुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे तरणं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसङ्गस्थं तत्राभिधानं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादो स्वरं प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। We now invite our distinguished dignitaries to come forward to facilitate our revered guests. The Honourable Stephen Barley MP, who will facilitate Pujya Swami Swarupananda Ji. Mr. Mark Hodges MP, State Member for Castle Hill, who will facilitate Swami Sri Karananda Ji. The Honourable Michelle Bryan, Mayor of the Hillshire Council, who will facilitate Brahmacharini Vasudha Ji. And Ms. Sandhya Reddy, Mayor of Strathfield Council, who will facilitate Brahmachari Darshan Ji. Thank you to our distinguished dignitaries for your presence today. It truly means a great deal to all of us. It is my honour to invite a senior and deeply beloved member of the Chinmaya Mission family, Nidhi Uppal Ji, to the stage to offer a few words of welcome. Nidhi Ji has been one of our formative Bal Vihar coordinators and has served the Chinmaya Mission Sydney Committee with great dedication and love. Please join me in warmly welcoming Nidhi Ji.
Could I please request everyone to settle down and sit down? Spirit. We present the element of wind in his celestial birth to the wind god Vayu and the monkey princess Anjana. The element of fire in his blazing triumph over Lanka when they set fire to his tail. Hanuman created a throne out of his tail when Ravana refused to offer him a seat of respect. Ravana's courtiers could not match the strength of Hanuman and retreated in fear. We present the element of space in his wondrous ascent towards the sun. Hanuman in a garden, running wild as a little boy, playfully teases the peacocks. Thinking the sun to be a ripe fruit, Hanuman flies across space in order to appease his hunger. The element of water in Hanuman's fearless crossing of the ocean, bearing Rama's ring to Sita. And finally, we present the element of earth in Hanuman's mighty flight with the Sanjeevani mountain to restore Lakshmana's life. Through these 5 episodes, this performance brings Tulasidas Ji's immortal verses to life in a vibrant offering of devotion. Hari Om. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु माहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा
सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीर्ति बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित मनीषा। यम कुबेर दिक्पाल जहांत, कवि कोविद कहि सके गात। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। विकट रूप धरि लंक अनुग्रह तुम्हारे तेज। राम दुआरे तुम
रघुपति के दासा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपति पुर जाए जहाँ जन्मी हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुनिते हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई यह शतबार पाठ कर कोई छोटा ही बंदी महासुख होए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 जय बोलो हनुमान invoking the blessings of the holy dust of the lotus feet of the Guru begins singing the glory of Raghuvar Sri Hanumanji. 75 years of a great movement by such a great visionary,
such a great spiritual master who has served and inspired and continues to instill in the hearts of young and old to live a life of inspiration, dedication, live a life of inspiration, dedication, of love, of harmony, and to bring in society peace and prosperity. And we've got such a great heritage of knowledge, which Puja Gurudev saw when he sat at the banks of the river Ganga, as you saw. And yet, we ourselves do not know the rich treasures we have in our sources of knowledge. In all life sciences, and therefore these 5 verses, Hanuman Chalisa, to inspire all of us. There is also a yatra that is going on where our youngsters are carrying this Gurudev's inspiration to the villages, to the towns, to the schools, to the colleges, so that many youth come to know about the great saints of Bharat, including our Gurudev, come to know the great heritage we have in our knowledge, such as the Bhagavad Gita, and the great strength and inspiration we can get through keeping Hanumanji as our. And at the same time, all this will culminate in October 23rd, 24th, 25th, city of Delhi, during the time where there is not much pollution, so don't be afraid. October is not the time of pollution. It's the most beautiful weather in India. And there, as some of you may have seen also on the social media, we have even requested the Prime Minister to be there, and there will be many wonderful, inspirational, spiritual, motivational gathering of all like-minded people, a huge conference, a good confluence, and I invite all of you to come there, October 23rd, 24th, 25th, and of course some of you can continue to go to the various different places of learning of Chinmaya Mission, such as Sidbari, Uttarkashi, Shankar Nilayam, Chinmaya Vibhuti, and to inspire everyone into learning this 5 verses of the Bhagavad Gita and having the inspiration to continue. Thanks today to AI, that another set of wonderful surprises are there for all of you. Many of you gathered here have at least heard a video of Gurudev, and some of you must have heard him in person. A teacher, a motivator, an orator like him does not exist. And Gurudev spoke mainly in English because he wanted that the educated masses who learn only in English should become aware of it, so that our nation, as it grows towards progress,
grows with this knowledge. Thanks to AI, now with Gurudev's own voice, Gurudev's own image, Gurudev's own style, we are bringing out Gurudev's discourses of the Bhagavad Gita in most of the languages in India, and a short glimpse and invoking the blessings of the Guru, we will. मैनुअल फॉर लाइफ यह किसी जंगल में किसी बूढ़े साधु के कानों में फुसफुसाई नहीं गई थी, यह युद्ध भूमि में गरजी गई थी। एक युवा राजकुमार को जो उलझन में था, ठीक वैसे ही जैसे आज का युवा। 5 ऐसे श्लोक हैं जो हमें झकझोर कर जगा सकते हैं, जो गीता का मूल और संपूर्ण विषय खोल देते हैं। నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలి, నిన్ను నువ్వే పైకి తీసుకురావాలి। జీవన ప్రయాణంలో కొంత ఎదిగిన తర్వాత మళ్ళీ పాత పద్ధతులు, పాడు ఆలోచనలు, చెడు అలవాట్లలోకి జారిపోవద్దు। నా వల్ల కాదేమో, నేను పనికిరానేమో అని ఎప్పుడూ నిరాశపడకూడదు, নিস্পৃহলোকি వెళ్ళకూడదు। শিক্ষক, শাস্ত্র, মন্দির এরা সহায়তা দিতে পারে, কিন্তু আপনার হয়ে পথ হাঁটতে পারে না। সব প্রচেষ্টাই প্রকৃত বিকাশের রূপ নেয়। আপনাকেই উঠতে হবে নিজে নিজের ভেতর থেকে। আত্মাইব রিপুরাত্মানা, এবং আপনি নিজেই নিজের একমাত্র শত্রু। এখানে তিনি বলেন আপনার কর্তব্য কেবল নিজের কাজ করা, তার ফল আশা করা নয়। കർമ്മ ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചോടൂ എന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ വാച്യാർത്ഥം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഫലചിന്ത പാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം? ഇത്തരത്തിൽ വികല ചിന്ത പാടില്ല, അത് ആലസ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കൂ। ഫലത്തെ പറ്റിയുള്ള ആകാംക്ഷയും നിഷ്ക്രിയത്വവും വളർച്ചാ വിരോധികളാണ്। കർമ്മനിരതനായിരിക്കുക, ഫലത്തിൽ നിസ്സന്നതയോടെ। കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, ഫലാകാംക്ഷാരഹിതനായി। പ്രയത്നിക്കുക, സമ്പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ। ഇതാണ് கர்மயோக ரகசியம். ஆனால் உன்னால் எண்ணிலடங்கா பொருட்களை அவருக்கு அர்ப்பணம் செய்ய முடியும். இறைவன் இருப்பதால் தான் உன்னால் அனைத்து செயல்களையும் செய்ய முடிகிறது. அந்த செயல்கள் அனைத்தையும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக செய், அது போதும். எத்கரோஷி, நீ இவ்வுலகில் என்ன செய்தாலும் பார்த்தல், கேட்டல், நுகர்தல், சுவைத்தல், தொடுதல் அனைத்துமே அந்த இறைவனின் அருள்தான் அல்லவா? ஆகவே அவை அனைத்தையும் இறைவனுக்கே அர்ப்பணம் செய்துவிடு. யதஷ்னாசி, நீ இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்வது உன் அகங்காரத்தையும் உன் சுயநல ஆசைகளையும் தான். நீ இதை மட்டும் செய்தால் போதும், மற்றதை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்று கிருஷ்ணர் பிரகடனம் செய்கிறார். ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನತ್ತ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ನಡೆ, ನಾನು ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಕುಳಿತು ಇಷ್ಟು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು? ಕೊನೆಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದುದು. ಇದೊಂದು ಭರವಸೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿಸು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲ, ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನೀವು ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಹರಿ ಓಂ, ಹರಿ ಓಂ. ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ಮರಣಂ.
Now thinking of Puja Gurudev and our entire Guru Parampara. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Samasta Jana Kalyani Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Satgurum Brahma Vidvaram Satgurum Brahma Vidvaram. And now invoking Lord Shiva with the Mrityunjaya mantra chanted 3 times. Om Trayambakam Yajamare Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityur Mukshiyamamritaat. Om Trayambakam Yajamare Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityor Mukshiyamamritaat. Om Trayambakam Yajamare Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityor Mukshiyamamritaat. Atha Achamanam. So just the priest will do this with each name or each swaha. Please take a sip of water from your right palm. Om Keshavaya Swaha. Om Narayanaya Swaha. Om Madhavaya Swaha. With this last one, please wash your hands, then touch your right ear. Om Govindaya Namaha. Atha Deha Shuddhihi. Now purifying the body, taking a flower and dipping it into the Panchapatra, the vessel with water, then sprinkle around you as the chanting goes on. Om Apavitra Pavitro Va Sarvavastangatopi Va Yasvare Kundari Kaksham Sabhahyabhyantara Shuchihi Atha Asana Shuddhihi. Using the same flower, please dip it into the Panchapatra, then sprinkle water around your seat as the chanting continues. Om Prithvitvaya Dhrita Lokaha Devi Tvam Vishnuna Dhrita Tvam Cha Dharaya Mam Devi Pavitram Kuru Cha Asanam Atha Gandhanadaha. To purify everything we use to offer the havan, please ring the bell gently as I chant. Om Agamartham Tu Devanam Gamanartham Tu Rakshatam Purve Ghandaravam Tatra Devata Ahvana Lakshanam Atha Disha Shuddhihi. So now we purify the directions, taking the same flower as before, dipping it into the water and then sprinkling above your head around you in a clockwise direction. Om Uttishtantu Bhuta Pisachah Yete Bhumi Bharakah Yete Shama Virodhena Brahma Karma Samarabhe Atha Dikbandaha. Now taking your index finger and middle finger of your right hand together, fold in your other fingers and gently in a clockwise direction, rotate your hand above your head and then tap it on your left palm. Om Bhurbhuvasvaro iti Dikbandaha Atha Pranayamaha. We can all do this together using the thumb on your right hand to close your right nostril and then breathe in through the left. Om Bhuhu Om Bhuvaha Om Savaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam. Closing both. Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Breathe out through the left. Om Apo Jyotiraso Amritam Brahma Bhurbhuvasvaro. You can just rinse your hand after. We'll now take our Puja Sankalpa, which is setting our intention, our resolve, and if there's anything we'd like to seek from Bhagavan, from the Guru Parampara, then now is a wonderful time to bring that thought to mind and set that Sankalpa. So please take a moment to close your eyes, think of your Sankalpa. And the priest at this time can take a little akshata, the yellow rice, 1 flower, and a little water in your right palm. Then you can make a fist with that and then
place it on your left palm and put all of that on your right knee. And now I'll just chant the Sankalpa. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Shri Mahavishnu Pravartamanasya Adya Shubha Yoga Shubha Karanadi Sakala Guna Visheshana Vijishtayam Asyam Shubha Tithau Om Namo Pata Samasta Duritakshaya Dvara Shri Parameshwara Prityartham Satguru Prasada Siddhyarthancha Asmakam Saha Kutumbana Kshema Sthairya Virya Vijaya Ayuhu Arogya Aishwarya Abhivridyartham Shraddha Bhakti Jnana Vairagya Siddhyartham Vidya Vinaya Prapyartham Dharmartha Kama Moksha Chaturvida Phala Purushartha Siddhyartham Loka Shantyartham Chinmaya Mission Sansthayaha Pancha Saptatima Varshostava Avasare Tasya Sansthayaha Sarvato Mukha Abhivridyarthancha Shri Hanumat Prasada Siddhyarthancha Hanumat Havanam Karishye. And you can offer this into the flower bowl in front of you. Now we will come to lighting the Havan, and then after that invoking Hanumanji into the Agni. Before we do that, a few reminders. The first is please put camphor onto your wooden spoon, then light the camphor as I chant, then you can offer that. The copper spoon you have next to you can be used for the ghee. Now if you have smoke coming from your kund, please offer more ghee first. Do not put in extra wood at that time, but put ghee first. And the Yajmans, we request that with your right hand, when you offer the samagri, please do a little at a time. And if you can remember to do so, bring your middle finger and ring finger to touch your thumb in a Mriga Mudra, if you can remember, and then offer with that. And of course, the final reminder to the priests, please just a drop of ghee at a time is more than enough. And of course, if there's smoke, once again, please offer ghee first. So now we'll light the camphor on your wooden spoon, and you can offer that into the coconut as we're chanting. Om Agnim Prajvalitam Vande Jatavedam Hutashanam Suvarna Varnam Amalam Samidham Vishvato Mukham Om Agnaye Namaha Agne Tvam Hanumat Namasi Atha Dhyanam. Now we're inviting Hanumanji and invoking Hanumanji. Aturita Baladhamam Hema Shailavadeham Nanujavala Krishanam Jnani Namagraganyam Sakala Gunanidhanam Vanaranavadhisham Raghupati Priya Bhaktam Vatajatam Namami Raghupati Priya Bhaktam Vatajatam Namami Atha Avahanam Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Swaha Shri Hanumantam Dhyayami Avahayami Pratishtapayami Pujayami. Keeping your hands at your heart as we invite Hanumanji. Agacha Varadeva Havane Me Sannido Bhava. We'll now offer a short puja to Hanumanji. Please offer everything to this into the kund, but on the side to avoid going directly into the flame. We first start with offering a spoon of water. Om Ham Hanumate Namaha Jalam Samarpayami. Followed by Chandan. Please dip a flower into Chandan, then offer that. Om Ham Hanumate Namaha Gandham Samarpayami. Taking another flower, we can offer this now. Om Ham Hanumate Namaha Pushpehi Pujayami. Then we'll do the dhupa. Please light it. Then once it's been offered, you can put it in, offer it into the kund. Om Ham Hanumate Namaha Dhupam Agrapayami. You want everything? What exactly you want? Chandan is not here. Then we'll offer the Naivedyam, which is in
the bowl covered by the aluminium foil. So you can open that, and with each swaha, offer a little bit of naivedyam with your hand into the side of the kund. Om naivedyam grahyatam deva bhaktim meha chalam kuru ipsitam me varam dehi nitya tripta namostute. Om ham hanumate namaha naivedyam nivedayami. Om pranaya svaha. Om apanaya svaha. Om vyanaya svaha. Om udanaya svaha. Om samanaya svaha. Om brahmane svaha. Now offering a spoon of water into the side of the kund. Om ham hanumate namaha achmaniyam samarpayami. Then we will do the Suvarna Pushpa Dakshina. Please offer some akshata. Om ham hanumate namaha Suvarna Pushpa Dakshinam samarpayami. Now we'll invoke Ganeshji and take his blessings, followed by the Hanuman Mahamantra, then the 11 times of the Chalisa chanting. When we hear this bell, it's a reminder for all of us, the priest to please offer ghee at that time, and the yajmans to please offer a little samagri at that time. And another reminder for the priests that when you are offering your ghee, there is another stainless steel bowl in front of you. Please gently place your spoon in there first before taking more ghee. Whatever is collected in that bowl becomes your Havan Prasad. So we'll now start with invoking Ganeshji. Om Gananaan Tva Ganapati Gum Havavahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shrinvannotibhis Siddhasadanam. Om Shri Mahaganapataye Svaha. Om Shri Mahaganapataye Idam Namah. Om Gananaan Tva Ganapatikum Havavahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shrinvannotibhis Siddhasadanam. Om Shri Mahaganapataye Svaha. Om Shri Mahaganapataye Idam Namah. Om Gananaan Tva Ganapatikum Havavahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shrinvannotibhis Siddhasadanam. Om Shri Mahaganapataye Svaha. Om Shri Mahaganapataye Idam Namah. Om Gananaan Tva Ganapatikum Havavahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shrinvannotibhis Siddhasadanam. Om Shri Mahaganapataye Svaha. Om Shri Mahaganapataye Idam Namah. And now doing the Hanuman Mahamantra. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Hanumate Svaha Idam Namah. We'll now do the Chalisa chanting 11 times.
And each time you hear the bell, please continue to offer samagri for the yajmans and ghee for the priest. And please, everybody, sing along nice and loudly together to create that atmosphere of devotion and invoke Hanumanji's grace and blessings. We'll now make a start. Use right hand. Use right hand. Oil to be used by right hand. You want to join us? Please come on. That side's free. जो
यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता मुगी कट्ट कट्ट Thank you very much. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति दीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरु कहाई जन की लांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुरमानुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते तापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है कर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता हृदय बसौ सुरभूषियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की
सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूठ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रघुवीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा जय प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर वीर जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाय जो शत बार पाठ करे कोई झूठे बंदी महासुख होय जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ धर्म डेरा संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय हनुमते स्वाहा इदं नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहारे धरणो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार हर बुद्धि विद्या देनु हरउ कलेश विकार ज्ञान गुण सागर जय कपीस तन लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूढ़ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सुजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाय सहस वदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका में मुख माहि जल्दी आमि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी
रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक भागते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके कार्य सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत वर वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव ज्ञानी, जो सत बार पाठ कर कोई, झूठे पंथी महासुत होय, जो यम करे हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, दीने नागर धर्म डेरा, संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय हनुमते स्वाहा, इदं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रघु मज मन मुकुर सुहाई, वरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बर बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरो क्लेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तनु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निहार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस वदन तुम्हरो जस गावे, हंस कर श्रीपति कंठ लगाए, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम
राम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय हनुमते स्वाहा ओम इतः पूर्वं प्राणबुद्धिदेह धर्म अधिकारतः जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु कर्मणा वाचा मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्ममुदरेण शिष्णा यत्कृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा मां मदीयं च सकलं श्रीहनुमच्चरणे समर्पये ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मस्तमादिना ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ